Sayam Kunda, Radhakunda, Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavanam Ki Jai, Maturadam Ki Jai, Navadipdam Ki Jai, Jagannatha Swami Ki Jai, Yamudamai Ki Jai, Shrimati Tulasi Devi Ki Jai. Service. Devotional service. Haro, Hara, Antahari, Antahari, Bhagavati, the Supreme Personality of Godhead. the Supreme Personality of Godhead. Prabhahan, Vaha, constantly engaging in. constantly engaging. Ajasram, Ajashram, always. always. Ananda, Ananda, blissful. blissful. Aren't you going to translate these things? Yeah, that's what you got the Bhagavatam for. Microphone. Blissful. आनंद से भरपूर. Bhashpa Kaleha, अश्वकलया, by a stream of tears. यानी कि आंसू के नेत्रों की धारा. Moho, मोह, again and again. बारंबार. Arjamanaha, अर्ध्यमाना, being overcome. उसके ऊपर पराजय. Viklidjamana, विद्यमाना, melting. पिघल जाना. Hridayaha, हृदय, his heart. हृदय. Pulaka, पुलका, standing of hairs. रोआ पुलकमान होना. Achita, अचिता, covered. ढका हुआ. Angaha, अंगहा, his body. उनका शरीर. Na, ना, not. नहीं. Atmanam, आत्माना, body. शरीर. Asmarat, अस्मरात, he remembered. उनको याद किया. Asau, असा, he. वही. Iti, इति, thus. उन्होंने. Muktalingaha, कलिंगा, free from the subtle body. अपना सूक्ष्म शरीर से परे हो गए. Translation, because of his transcendental bliss, incessant tears flowed from his eyes, his heart melted, and there was shivering and standing of the hairs all over the body. Thus transformed in a trance of devotional service, Dhruva Maharaj completely forgot his bodily existence, and thus he immediately became liberated from material bondage. यहाँ पर ध्रुव महाराज जी के बारे में बता रहे हैं. तो वो दीप्ता से प्रेम के अनंत से विभोर हो गए थे. उनके नेत्रों की धारा बहने लगा. उनका हृदय जो है वो पिघल गया और उनके रोआ पुलकमान हो गया और उनमें दीप्ता आ गया और उससे बदलाव हुआ कि ध्रुव महाराज अपने शरीर से भी परे हो चुके थे और संसारिक हर एक बंधन से वो मुक्त हो चुके थे. So I think because this is a long purport, you just do it in Hindi. So we don't have to do the English. Okay, so just read the purport to them in Hindi. Can you do it? Yeah. Okay. You read it? No, because it'll take too long. So just do the Hindi. It's a pretty long purport. क्योंकि ध्रुव महाराज भगवान के भक्ति में लीन हो चुका था. भगवान के नाम जपन कीर्तन जो नौदा भक्ति है उसमें लग चुके थे और 9 प्रकार की भक्ति है. Shrimad Garanjana Shilakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who has so kindly opened my eyes with a torchlight of knowledge while I was blinded in the darkness of ignorance. गुरु महाराज कह रहे हैं मैं अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ जिसके ज्ञान के द्वारा मेरा अज्ञानता का नष्ट हुआ है और मुझे प्रकाश में लाया है. So what we are hearing described here are something called the Bhavas. आप जो आज सुन रहे हैं इसको कहते भाव. And these are the Bhavas, of course, of someone who is on a very advanced or pure devotee platform of devotional service. ये जो भाव है ये बताया गया है जो प्राणी जो भक्त बहुत उच्च कोटि के स्तर पर पहुंच जाता है तब ये भाव का लक्षण प्रकट होती है. So the acharyas, such as Srila Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, and others, have analyzed and categorized these different bhavas. तो आप देखेंगे जो महान महान भक्त है जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि ये सब लोग में जो भाव है ये उनमें प्रकट थे. So the first bhava is called Vibhava. तो पहला जो भाव है उसको कहते हैं विभाव. Vibhava means that particular experience
which stimulates the other emotions. तो बी भाव का मतलब है कि ये जो हमारे में अनुभूति होता है वो और गहरा अनुभव आगे चलकर उसको प्रकट करता है। Let me give a material example of what I mean. मैं एक सांसारिक उदाहरण दे रहा हूँ। Let's say you ladies, you see your little baby, जैसे जितनी माताएं हैं अपने बच्चे को देख रहे हैं, and tears come to your eyes because of seeing that baby. अपने बच्चा को देखने के पश्चात आपके नेत्रों की धारा बहने लगता है। So what stimulates you is the sight of the baby. ये जो आपके नेत्र में धारा आया क्योंकि तुम्हारा बच्चे के प्रति जो लगाव है वो प्रकट किया। And then the response to that, which is called an anubhav, is the crying. और उसका परिणाम क्या है? बच्चा को देखा, वो लगाव जो बच्चा को देखा, उसका परिणाम हुआ आपके नेत्रों की धारा बहने लगा। In Sanskrit, that's called alambana, the direct, let's say, manifestation of your devotion is stimulating your emotion. तो उसको आलम्बना कहते हैं, मतलब आपने जैसे उसको देखा तो वो आपके भीतर से अनुभव प्रकट होता है। And so, let's talk about something called udipana, where the indirect manifestation of your love is stimulating your emotion. एक और उद्दीपना कहते हैं, यानी कि जो प्रेम वो कैसे इनडायरेक्टली, लेकिन तुरंत नहीं, वो इनडायरेक्टली रूप से आप उसको अनुभव करोगे। Let's say you have a little baby, but then instead of seeing the baby, you see his shoes. अब है तुम अपने जो बेबी है उसका जो जूता है वो आपने देखा, And then you start crying because it reminds you of the baby. तो तुमने जूता को देखकर अपने बच्चे को याद हुआ और तुमने रोने लगा। So the same thing happens with pure devotees in relationship to Krishna. उसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, भगवान के साथ रिश्ता में यही प्रकट होते हैं। When they see Krishna directly, they go into all these symptoms of ecstasy, the anubhavs, like drooling from the mouth, tears coming from the eyes like torrents of rain. और ऐसे ही जैसे भगवान के ही शुद्ध भक्त जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, यही 8 सत्व का विकार उनमें प्रकट होने लगता, नेत्रों की धारा बहने लगता, रोआ पुलकमान होता। Just like we have this song, Gauranga Balite Habi Pulaka Sharir. When I hear the name of Gauranga, then all the hairs on my body stand up, and I cry in ecstasy. Hari Hari Balite Nayani Babi Near. जैसे गुरु महाराज ने जो भी कीर्तन गाया, गौरंगा बोलिते है वे पुलक शरीरा, कि मैं कैसे जैसे गौरंगा जी का नाम लूंगा, मेरा रोआ पुलकमान, नेत्रों की धारा बहने लगेगा। So that's a vibhav, that which stimulates your emotion and relationship with Krishna. यानी कि विभाव तुम्हारा जो भावना है वो कृष्ण के प्रति और तेजस्वी कर देता है। And then the indirect stimulation in relationship to Krishna is, let's say, when you see a peacock fan. और जो बाहर का है वो भीतर का था। बाहर का समझो कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन कृष्ण जी का मोर पंख देख लिए। For example, there's this story of this great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. His name was Mukunda. एक चैतन्य महाप्रभु का बहुत महान भक्त था, उसका नाम था मुकुंदा। And he was serving the Muslim king at a particular time. उस समय मुकुंदा भक्त जो है वहाँ के जो मुसलमान राजा था उसको सेवा प्रदान कर रहे थे, Because he was a doctor. क्योंकि वो व्यापार से वो एक डॉक्टर था। And so then someone came up and started fanning this Muslim king with a peacock feather, with a peacock fan. तो उसी समय उस राजा के पास कोई मोर पंख लेकर उसको पंखा करने लगा। And then he immediately fell down from the platform that he was on and dropped to the ground in ecstasy when he saw the peacock fan, because it reminded him of Krishna. लेकिन मुकुंदा वहीं पर बैठा था ऊंचे स्तर पर, उसने देखा खाली मोर पंख, तुरंत उसको भगवान श्री कृष्ण याद आ गया, विभोर हो गया, और जिस स्तर पर वो बैठा था वहां से वो गिर जाता है। So the Muslim king rushed down and said, "What's the problem?" तो जो मुसलमान राजा था पूछा क्या हुआ, And he said, "Oh, no problem, I have epilepsy." और उसने कहा नहीं मुझे मिर्गी आने लगा। And so he was trying to hide the fact that he was a pure devotee from the Muslim, because you don't want to commit the offense on the holy names where you tell the glories of the holy name to those who are envious.
लेकिन उस समय मुकुंदा जी ने क्या किया, उसको ऐसा नहीं बताया, वो ढाकना चाहता था अपना शुद्ध भक्ति, क्योंकि अगर मैं इसको भगवान के नाम देता तो ये तो तैयार नहीं स्वीकार करने, तो अपराध हो जाता। So both of these things, these stimulations, the indirect and the direct stimulation, they affect pure devotees of the Lord. तो ये जो भाव है हमारा भीतर का बाहर का भगवान के प्रति, ये भक्त उसको अनुभव करता है। One time we were with Prabhupada, and generally Prabhupada hid his ecstatic symptoms. गुरु महाराज कह रहे, मैं एक बार शिला प्रभुपाद जी के था, और शिला प्रभुपाद में ये जो अष्ट विकार है उसमें था, लेकिन शिला प्रभुपाद जी इसको ढाक के धरे थे। So Prabhupada arrived at a temple and he saw Gaur Nitai. शिला प्रभुपाद जी जब मंदिर आया तो गौर निताई जी को देखा। And then Prabhupada started chanting this song, Parama Karana Po Dvijanam Nitai Gaurachan, which means the most merciful Lords, Lord Chaitanya and Lord Nityananda. और शिला प्रभुपाद जी उन विग्रह के आगे आकर कीर्तन गाने लगा कि हे सबसे महाकरुणा भगवान नित्यानंदा और गौरंगा महाप्रभु। And then Prabhupada immediately became unconscious. और उसी समय शिला प्रभुपाद जी मूर्छित हो गया। He went into trance. और बताया गया है गहराई में चला गया भक्ति। And the devotees didn't know what to do. और वहाँ जितने भक्त था सबको मालूम नहीं कि क्या हम करें। And after a few minutes they started chanting Hare Krishna, and then Prabhupada came back to external consciousness. तो थोड़ी देर बाद सब भक्त लोगों ने जब कीर्तन शुरू किया तो शिला प्रभुपाद जी अपने वास्तविक निज रूप में आया। And then they asked Prabhupada, what should we do when this happens? तब सभी भक्तों ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि हम क्या करें उस समय। And Prabhupada, he said, he was apologetic. Oh, this doesn't happen very often, don't worry. और शिला प्रभुपाद जी कहने लगा, हमें क्षमा करना, ये हर समय नहीं होता है। Because the pure devotee holds back these symptoms of ecstasy because people will take it cheaply if he does it. क्योंकि जो शुद्ध भक्त रहता है, उसकी जब दिव्य लक्षण प्रकट होने लगता है, वो उसको अपने में समेट लेता है, वो दिखाना नहीं चाहता किसी को। Just like there's an interesting story about Haridas Thakur. जैसे हरिदास ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कथा है। Once upon a time, there was a person who was doing a snake dance. एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो वो सर्प की तरह नृत्य कर रहा था। And he was glorifying Anantashesh, who was the original snake, Seshanaga. और वो व्यक्ति जब नृत्य कर रहा था तो अनंत शेष की गुणगान कर रहा था। And Haridas Thakur was watching this. हरिदास ठाकुर उसको देख रहा था। And he became so ecstatic, he started dancing in ecstasy, fainting and everything like that. लेकिन हरिदास ठाकुर उसको देखकर वो मूर्छित हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा, विभोर हो गया। And the snake charmer understood that this was a pure devotee who was actually exhibiting the Bhavas. लेकिन जो वो सर्प के आगे नाच रहा था, वो तुरंत पहचान कर लिया कि ये भगवान का बड़ा शुद्ध भक्त है, क्योंकि इसमें भाव प्रकट हो गया। And he bowed down to Haridas Thakur, and everybody bowed down and touched Haridas Thakur's feet. सभी लोग हरिदास ठाकुर के फिर चरण स्पर्श किया। So at the same time, there was a Brahmin watching the whole thing. लेकिन वहीं पर एक ब्राह्मण था, ये भी देख रहा था। And the Brahmin was thinking, hey, I want everyone to touch my feet. लेकिन वहाँ पर जो ब्राह्मण देवता था, वो बोला, अरे हमारे चरण आके छू। Why are they respecting this person who was born in a Muslim family? I'm going to do the same thing he did, and then they will bow down to me and give me donations. और वो ब्राह्मण देवता कहने लगा, अरे इसके चरण क्यों पकड़ रहे हो? ये तो तुच्छ एक मुसलमान परिवार में जन्मे है। अरे मैं भी वही कर सकता हूँ, मेरा चरण आकर छू और मुझे धन दो। So then this Brahmin imitated Haridas Thakur, started dancing and rolling on the ground and crying and everything like that. और ये ब्राह्मण देवता ने फिर नाचने लगा, मट्टी में लौटने लगा, रोने लगा। And so then the snake charmer understood it was an imitation, and he kicked the Brahmin. और वो जो सर्प के आगे नाचने वाला, नृत्य करने वाला व्यक्ति जान गया ये नाटक कर रहा है, और अपने पैरों से प्रहार किया। And so he kept kicking the Brahmin. और वो बारंबार उस ब्राह्मण को फिर अपने पैरों से प्रहार करते गया। So you know in India that when you touch someone with your feet, it's considered a big offense. भारतवर्ष में कोई अपने पैर से अगर किसी को छूता है तो बहुत बड़ा अपराध माना गया है।
If you really want to offend someone, you throw your shoe at them. कोई के वास्तविक में तुम बहुत निरादर करना चाहते हो, अपराध करना चाहते हो, तो उसके ऊपर जूता बीजिए। Don't do that. ऐसा कदाचित मत करना। So, anyway, so then the Brahmin said to the snake charmer, "Why did you kick me? I was simply actually doing what Haridas Thakur did." And the snake charmer said, "You were doing it for imitation, trying to achieve something material." वो जो सर्प के नर्तिका है, वो उससे पूछा ब्राह्मण, तुम मुझे क्यों मारा ऐसा? I said, "More than that." Usually you say more than me. Now you're saying less than me. All right. You don't have to try. No, I understand. I understand. I'm just teasing. So anyway, this imitation is not really a symptom of ecstasy. ये जो नकलीपन है, ये हमारा निज भाव का प्रदर्शनी नहीं है। Although sometimes even someone who is not a devotee can experience some ecstasy. कभी-कभी कोई भक्त नहीं है, कुछ-कुछ हमारे में भगवान के प्रति वो भाव है, वो प्रकट हो सकता है। That's described in the nectar devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, as dried up or burnt up ecstasy, that even an impersonalist sometimes. तो ये भक्ति रसमिंद सिंधु में बड़ी सुंदर से कहा गया है कि ये झूरा हुआ हमारा जो भक्ति है, उसका प्रदर्शनी है। Just like one time, we were having a big festival. It was in a city called San Diego. एक बार गुरु महाराज कह रहे, एक बहुत बड़ा उत्सव हम लोग बना रहे थे अमेरिका में। And we were chanting Hare Krishna. All the devotees were in complete ecstasy chanting Hare Krishna. और सभी भक्त लोग विभोर से भगवान के नाम जप कर रहे थे। And then a non-devotee walks by the festival. और क्या हुआ, एक बगल में से कुछ लोग जो भक्त नहीं थे वो गुजर रहे थे। And I was distributing books at that time. श्रील गुरु महाराज जो है उस समय पुस्तक का वितरण कर रहे थे। And he said, first thing he said to me is, "Why am I feeling so much ecstasy?" और उस व्यक्ति जो भक्त नहीं था, गुरु महाराज से कहने लगा, मुझ में क्यों ये दीप्ता आने लगा, मैं कैसे ऐसे क्यों अनुभव कर रहा हूँ? Are you devotees burning marijuana or something? कि तुम भक्त लोग ये कुछ marijuana जो है ना, ये इसको ग्रहण तो नहीं कर रहे हो? And then we are breathing the marijuana in. कि तुम लोग उसको सूंघते हो? And I said, no, it's due to the holy names. गुरु महाराज ने कहा, नहीं, ये marijuana की जरूरत नहीं है, भगवान के नाम की महिमा। So such is the potency of the holy name that even if there is ecstatic kirtan, ecstatic Bhagavatam recital, or some pure devotee present, then one can experience symptoms of ecstasy, even if one's not a devotee. तो बताया गया कहीं पर एक शुद्ध भक्त है या भगवान के नाम अगर दीप्ता से लिया जाए तो हमारी में वो जो विभोरता है वो हम अनुभव करेंगे उसी समय। But unless one takes up devotional service, that ecstasy doesn't continue. लेकिन जब तक ये भक्ति को तुम स्वीकार नहीं करोगे, वो निरंतर आपके पास नहीं रहेगा। So there's other types of bhavas. We're going to talk about them very quickly. और भी रकम के भाव हैं, गुरु महाराज जल्दी जल्दी बात बताएंगे। I mentioned the vibhava, which is the thing that excites you. Then there's the anubhava that follows the emotion that naturally follows the vibhava. तो पहले मैं विभावा के बाद बताया हूँ, फिर उसके बाद में अनुभाव के बाद बताया हूँ, जिसके विवाह के बाद में अनुभाव आता है। And then there's the sattvika bhavas, the asta. There's 8 emotions that are naturally part of a devotee's constitution, being in the mode of goodness. उसके बाद में जो 8 रकम के भाव रहते हैं जो हमारे में प्रकट होते हैं, जैसे रोआ पुलकमान, नेत्र के धारा बहना, शरीर के रंग बदलाव हो जाना। And finally, there's something called vyabhichari bhava, or sanchari bhava, same thing. और उसके बाद में जो अंतिम है उसको भव्यचारी भाव कहते हैं, जो संचिंत भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। And there are 33 of those, and they're so intense that they come without a devotee even knowing they're coming, and they overwhelm a devotee. और 33 और है उसमें जो बताया गया है संचारी भाव के भीतर, जो आप जो दीप्ता को अनुभव करोगे उसके भीतर। I mean, they're like complete unconsciousness or practically dying,
or losing control of oneself due to emotions. और वो स्तर पे जब आप चला जाओगे तो आप एकदम मूर्छित हो जाओगे, यहाँ तक भी तुम अपने प्राण दे सकते हो, यानी कि तुम ये देह में रह नहीं पाओगे, तुम्हारा चित्त इससे परे हो जाएगा। I'll give one example of that. एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। Once upon a time, Krishna was with Radharani. एक समय में क्या हुआ, श्रीमती कृष्ण भगवान राधा रानी जी के साथ थे, And Madhumangal was there. और वहाँ पर भगवान के सखा मधुमंगल था। At the same time, there was a bee that was bothering Srimati Radharani. उसी समय क्या हुआ, एक मधुमक्खी जो है राधा रानी को तंग कर रही थी। And it was just hovering around and she was pushing it away. और राधा रानी के शरीर में आ रहा था, राधा रानी अपने हाथों से उसको भगा रहा था। So, we all know that Krishna's name is Madhusudana. भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। So in Sanskrit, Madhu also means bee. और संस्कृत में मधु को मधुमक्खी भी माना गया है। So, Madhumangal, he chased this bee away. और मधुमंगल जब आया वहां पर तो मधुमक्खी को वो भगा दिया। And then he said to Radharani, Madhu is gone. और फिर मधुमंगल आकर श्रीमती राधा रानी से कहने लगा, चिंता मत होइए, मधु चला गया। So Radharani thought, Srimati Radharani thought that Krishna, Madhusudana was gone. लेकिन श्रीमती राधा रानी ने कुछ और सोचा, उसने सोचा कि मधुसूदन चला गया। So she started crying and fell unconscious. और श्री राधा रानी ऐसे सुना, तुरंत विभोर हो गई और नेत्रों के धारा बहने लगी। And then when Krishna saw that happen to Radharani, because Krishna was still there, he also became unconscious. और तुरंत कृष्ण भगवान वहीं पे था, राधा रानी की उस स्थिति देखा, भगवान भी बताया गया है, वो भी विभोर होकर मूर्छित हो जाता है। Now, this is an instance of one of the Vyabhachari or Sanchari Bhavas. ये व्यभिचारी या तो संचिंत भाव का लक्षण है। So, our goal, one of our goals in Krishna consciousness, is to actually experience these emotions of love of Krishna. हमारा ये कृष्ण भावनामृत में लक्ष्य क्या है, ये सब जो भाव गुरु महाराज बताए, इन सबको अनुभव करना है। Just like we recited this poem, Gauranga Balite Havi Pulaka Sharir. So this is the hankering of a pure devotee. भक्त का यही प्यास होना चाहिए कि हमारे में ये सब लक्षण जो है, जो गुरु महाराज ने कीर्तन गाया, वो सब हम भी ऐसे गाकर अनुभव करें। When will this day come when I chant Gauranga and I will feel the shivering? कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान का नाम लूंगा गौरंगा का और हमारे में दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। Instead, when we hear the name Gauranga or we go to Bhagavatam class, we go to sleep. लेकिन क्या होता है, जहाँ पर ये लक्षण प्रकट होना चाहिए, लेकिन हम कथा सुनते हैं तो कथा में ही सो जाते हैं। One time Prabhupada was giving Bhagavatam class and everyone was sleeping. एक बार श्रील प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे, तो जानते हो जितने वहाँ भक्त थे श्रोता के रूप से सब सो गए। Because the devotees have been up 24 hours a day for the last few days before that preparing for Prabhupada. लेकिन क्यों सो गए थे, लेकिन वो जितने भक्त श्रील प्रभुपाद जी के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि आ रहा था तो 24 घंटा वो लोग जागरण करते थे। And then when Prabhupada looked at all the devotees, he said, this Krishna conscious movement is going on only by Krishna's mercy. तो श्रील प्रभुपाद जी कहने लगा, ये जो कृष्ण भावना का जो आंदोलन है, ये भगवान कृष्ण जी के ही कृपा से चल रहा है। Because he understood, with all the devotees sleeping Bhagavatam class, it wasn't going on because of their devotion. और क्योंकि उसने देखा कि सब भक्त लोग सो रहे थे, तो भक्ति के कारण से नहीं, तो प्रभुपाद जी से ये भगवान कृष्ण की कृपा से चल रहा है। So many of the songs of the acharyas, like Narottama Das's song Gauranga Balite Habi, are based on this hankering or this greed for pure devotional service. आप देखेंगे ऐसे दिव्य भक्त लोग जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, इनका जो भजन में है, ये लोभ प्रकट कर रहे हैं भगवान के प्रति, कि कैसे उनमें वो लोभ आ जाए भगवान के नाम रूप के शक्ति के द्वारा। Just like the song of Bhaktivinoda Thakur, Kabi Habi Bolo Se Dinamar, when will that day be mine? तो ये भगवान की जो शुद्ध भक्त है, ये अपने भजन में बोलेंगे वो दिन कब आएगा भगवान की हमारे में दिव्य लक्षण प्रकट होंगे। So we should focus our mind like that. We want to achieve, we are greedy to achieve pure devotional service, to experience the ecstasies.
आप में ऐसा लोभ अगर प्रकट हो जाए कि कब कब मेरे में होगा, और वो लोभ को प्रकट करना ही सबसे गुड़ चीज रह जाता है। Because everyone wants to be happy, right? सब कोई तो आनंद में रहना चाहता है। So when you're Krishna conscious, Kevalananda Kam, there's only happiness. एंड ये जो कृष्ण भावना मृत है, यही तो दिव्य आनंद देगा आपको। So Dhruva Maharaj here is actually experiencing these symptoms of pure devotional service. तो यहाँ पर जो ध्रुव महाराज है, वो ये सब दिव्य लक्षणें वो अनुभव कर रहे हैं। And we should also experience these things hopefully in the future. और गुरु महाराज ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब भक्त लोग भविष्य में भी ये सब अनुभव करेंगे। Okay? Any questions or comments? ठीक, कोई के पास कोई सवाल, कोई प्रश्न Or arguments? इसमें कुछ Yeah. टिप्पणी है? Sometimes you may not be on a pure devotional platform, as you mentioned, but you can still experience temporarily such ecstasy. Yeah. Are they purified? किशोर प्रभु पूछ रहे हैं कि कभी कभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बने हैं, मतलब, और ये सब लक्षणें प्रकट हो रहे हैं, तो अगर ये लक्षणें प्रकट हो रहे, क्या हम उससे शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते? Yes, if one has the right understanding of the philosophy. गुरु महाराज कह रहे हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारा वो जो ज्ञान का जो सही मूल सिद्धांत है तुम समझ रहे हो तब। Because if one is an impersonalist and think that the ecstasy is due to, merging into Krishna, then his ecstasy degrades at that point. लेकिन अगर कोई निराकारी रूप से भगवान को मान रहा है और उसमें प्रकट हो रहा है, तो उसका जो भाव है वो बताया गया है और विनाशकारी केवल जाएगा। Because the ecstasy that one experiences in the beginning is not exactly para or transcendental. शुरुआत में जो भाव हमारे में प्रकट होता है वो एकदम दिव्य स्तर के नहीं है। So at the same time, one has to cultivate knowledge of what we call sambandha gyan. क्योंकि उसके साथ साथ में हमें ये संबंध ज्ञान जो है, भगवान के साथ जो रिश्ता है, वो कायम करना पड़ेगा। We should study Prabhupada's books to understand who is Krishna, what is the jiva soul, what is the material world, what is time, what is karma, etc. क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा पहचान कौन है, ईश्वर का पहचान कौन है, ये प्राकृतिक का पहचान क्या है, और समय का और तुम्हारा कर्म का, ये सब का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। It's like a devotee was telling me yesterday about another devotee who was giving class. जैसे मुझे एक भक्त बता रहा था कि कोई और एक भक्त कथा कर रहा था, And he said he only read, I guess, once. So he only knew one verse. और वो भक्त सिर्फ एक ही श्लोक जानता था। So the only verse he knew was Dehinos Minyata Dehe Komaram Jovanam Jaratata Hanturas Praptir Dirastatra Namuyati. So every class was about the same verse. और हर समय जब भी प्रवचन होता है, यही गुरु महाराज ने जो श्लोक बोला, देहनस्मित, यही श्लोक को बारंबार दोहरा रहा है। And so the devotee said to him, "Can you speak about something else today?" वो भक्त जाकर कुछ श्रोता सुनना था, बोले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कुछ और सुनो बताओ। So one of the things that will help us read more and study Prabhupada's books if we preach, if we explain what we're reading to others. हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे कब? जब हम लोग कुछ ज्ञान को वितरण करेंगे, तब आपको अच्छा लगेगा और जानने में, क्योंकि आप बताना चाहते हैं। The reason I know so many verses is because whenever I learned a verse, I went out and preached that verse to others. गुरु महाराज कहते हैं मैं बहुत श्लोक इसलिए जानता हूँ कि मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ, मैं वो श्लोक को दूसरे को बताता हूँ। Anytime I read something that is very interesting, which is everything in Prabhupada's books, I write it down so I can remember to explain it to others. श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक में हर एक चीज बताया गया है, बहुत आनंददायक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ और लिखने के बाद में मैं इसको अपने मस्तिष्क में उतार लेता हूँ ताकि मैं दूसरे को बता सकूँ। If you don't preach, what you read will go in one ear and it'll come out the other ear. अगर तुम प्रचार नहीं करोगे और तुमने पढ़ा है तो इधर से कान में हलेगा, उधर से निकल कर चला जाएगा। So we have to read regularly and preach. These are two things.
तो श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि दो चीज रोज करना है, कि रोज पढ़ना है, रोज प्रचार करना है। This is called Bhagavat Vidhi. इसको भागवत विधि कहते हैं। We also have Panchratriki Vidhi, which is the deity worship. एक और एक विधि है, दो विधि, दूसरा विधि को कहते हैं पंचरात्रिक विधि, But if जिसको you- विग्रह की पूजा माना गया है। But if you simply do Panchratriki Vidhi and not the preaching and studying, you will remain on the lower platform. लेकिन तुम सिर्फ पंचरात्रिक विधि को पकड़े हो, यानी कि खाली विग्रह है और उसके खाली पूजन कर रहे हो, तो क्या है, तुम कनिस्तर के कनिस्तर रह जाओगे। So you must do both things, the puja and also preaching and reading Bhagavad Vidhi. तो आपको दोनों करना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगा, यानी कि और आपको संगे संगे प्रचार भी करना ही पड़ेगा। These are like two rails in which a train runs. ये दो, जैसे हमारा ट्रेन है ना, दो ट्रेन लाइन पे चलता है, उसी तरह दोनों साथ में। Just like you have your sugar cane trains here in Fiji. फीजी में जैसे शुगर केन ट्रेन है, And so there's two rails. और उसमें दो लाइन है, And one rail is broken, what happens with the sugar cane? एक टूटा, दूसरा क्या होगा आप सोचिए, Collapses. कोलैप्स हो जाएगा। Collapse of jaga. Don't you have a word in Hindi for collapse? It's Fiji Hindi, I know. There's chemistry, when we do chemistry, Yeah, there's theory and the practical. yeah, theory and And we practice. have to do two tests together. So, yeah. So, one other question. Gurudev, I'll ask. In Hindi, you can ask in Hindi. हमको भी जैसे नहीं आता ना, जैसे अपन वाली जैसे राइट समझता है ना, जैसे हम चाहे टाउन हो, चाहे दुकान हो, चाहे स्ट्रीट हो, चाहे होटल के किचन हो, चाहे बहरे हो, चाहे रिसेप्शन, कई कभी तीनों के उनके घुमाने के लिए, उनके हरे कृष्णा घुमाने के लिए मांगता। Gurudev is asking that whether it's a street or whether it's a town, whether it's a cafe, it's a market or anywhere, I'm just trying to let them dance and chant the holy name, whether I'm doing right thing or not. Yes, that's very nice. Guru Maharaj कह रहे बहुत अच्छा कर रहे हो, But also, give a little knowledge, just at least tell them there's God and we're servants of God. No, the Fijians know that too, that we're servants of God. गुरु महाराज कह रहे हैं कि ठीक है तुम उतना कर रहे हो, लेकिन संगे संगे ज्ञान दो कि भगवान है कहीं और भगवान कौन है, और ये अगर बता सको तो और अच्छा है। Just like, the Fijians, they also chant, Jesus loves you, little children, or whatever. God is great, and the Muslims, they're chanting Allah Akbar. So we just encourage them according to their own culture. तो उनके ही समाज में जो ज्ञान प्रस्तुत है, उनके द्वारा वो ज्ञान आप अपना ज्ञान लाकर उनके जो विधान के भीतर है आप ज्ञान दीजिए। Of course, some people you can't preach to because they'll just commit offenses. That's true. कुछ लोगों को आप नहीं प्रचार करें क्योंकि वो अपराध कर देगा। So just give them some prasadam, let them hear the holy names. तो उनको प्रसाद दो और भगवान के नाम सुनने दो। But at least you can preach to your family, your wife. लेकिन आप प्रचार कर सकते हो अपने परिवार पत्नी को। And if you can't preach to your wife, you're in trouble. लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को प्रचार करोगे तो आप बहुत ट्रबल में हो जाओगे, यानी कि बहुत मुसीबत में हो जाओगे। Maybe you should just go, Ranya Tena Gantavyam Yata Ranya Mitagraha. Maybe you should just head for the forest or something. उससे अच्छा है आप वन चले जाओ, पत्नी को प्रचार से अच्छा है। Because Chanakya Pandit says that if your wife doesn't speak pleasingly, then better you head for the forest. चाणक्य पंडित जी कहते हैं अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा पत्नी मीठे शब्दों से मधुरता से बात नहीं करे, उससे अच्छा जंगल भाग जाओ। Because your home is already like a forest. क्योंकि जो घर है वो तो स्वयं जंगल हो चुका है। So you should go to a jungle where you can make spiritual advancement. तो घर ला जंगल छोड़ के चुपे आप सही जंगल में चला जाओ, वहाँ पर आपके आध्यात्मिक उन्नति होगा। Okay, all right. This is time for prasadam now. ठीक, प्रसादम के समय है। All glories to His divine grace. Srila Prabhupada ki jai. Whoops. Show everybody. Okay. Okay.
Savusavu Yatra ki jai.